Hello viewers, this is Professor Dr. Waseem Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Family Law 2nd. Today we will try to understand the definition of full blood, half blood and uterine blood under Hindu Succession Act 1956. So previously we have already discussed the definition of heirs, definition of intestate as well as definition of agnate and cognate. So if you want to watch the videos of those definition, you can go on my channel and select the playlist of family law and you can watch all these videos from the family law. So let us proceed towards our topic, full blood, half blood and uterine blood. So this is a very important topic. If you want to distribute the properties amongst the heirs of any intestate, you must understand the definition, all these definitions, then only you can distribute the property, otherwise you cannot distribute easily. So full blood relation, section 3 subclause 1E1. So this is a definition of full blood relation. Two persons are related to each other by full blood when they are descended from common ancestor by the same wife. So we are trying to understand the relationship of between the two persons. If two persons are related and descendant from a common ancestor by the same wife, then the relationship between these two persons will be a full blood relationship. In short, we can say that related means by legitimate kinship only. So ancestor includes the father and ancestress the mother. Suppose if the two persons are descended from a common father and common mother, then the relationship between these two persons will be called as a full blood relationship. In short, हम कह सकते हैं कि अगर दो लड़के हैं या एक लड़का एक लड़की है, अगर ये दोनों के माँ बाप अगर सेम हैं, तो ये जो लड़का और लड़की के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो फुल ब्लड रिलेशनशिप कहलाएगा. दोनों सन के बीच का जो रिलेशनशिप कहलाएगा वो फुल ब्लड रिलेशनशिप होगा. So when the father and mother of two persons are the same, they are said to be related to each other by full blood. If the father and mother of two persons are same, then the relationship between these two persons will be a full blood relationship. अगर दो पर्सन के माँ बाप अगर सेम है, एक ही है, तो ये दो पर्सन के बीच का रिलेशनशिप फुल ब्लड रिलेशनशिप कहलाएगा. So suppose if this is a father and mother, and now this is a one son and this one is a daughter. Now we will try to understand the relationship between these two, son and daughter. So the relationship between the son and daughter will be a full blood relationship. तो ये जो रिलेशनशिप हो जाएगी ये फुल ब्लड रिलेशनशिप हो जाएगी, क्योंकि ये जो पर्सन है, दो सन और डॉटर, इन दोनों के माँ बाप एक ही है. इसकी भी माँ एक यही है, इसकी भी माँ यही है, इसका भी फादर यही है और फादर यही. दो बोथ दिस सन एंड डॉटर आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन फादर एंड मदर. दोनों का बाप सेम है, दोनों की माँ सेम है. सो अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू पर्सन, ये दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है ये फुल ब्लड रिलेशनशिप कहलाएगी. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अगर दो पर्सन का रिलेशनशिप हमको डिसाइड करना है कि दोनों के बीच में फुल ब्लड रिलेशन है या हाफ ब्लड है या यूटेराइन ब्लड है, तो अगर दो पर्सन के माँ बाप अगर सेम है तो रिलेशनशिप फुल ब्लड रिलेशनशिप होगा. नेक्स्ट वन इज a half blood relation, section 3 subclause 1E1. So two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife, and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives. So if the father and mother of two persons are same, relationship will be a full blood. But when the father is same but the mother is different, then the relationship will be a half blood relationship.
अगर दो पर्सन है, दोनों के फादर एक है लेकिन माँ अलग अलग है, तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशनशिप कहलाएगा हाफ ब्लड रिलेशनशिप. Thus, when two persons have the same father but different mother, they are related to each other by half blood relationship. So if the father of two person is same but the mother is different, then the relationship between the two person will be a half blood relationship. So thus the step brother or step sister born of their father's different wives are related to each other by half blood. Step sister, step son जो दूसरे फादर के दूसरे वाइफ से अगर पैदा होते हैं तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप हाफ ब्लड रिलेशनशिप कहलाएगा. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ हाफ ब्लड बाय ये जो रिलेशनशिप ये जो यहाँ पर था ये फुल ब्लड गलती से आ गया, हाफ ब्लड था. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ हाफ ब्लड. Father and this is a particular mother, then mother. Father है, उसके दो wives है for example, then this is a son and this is a daughter. So this particular son, ये जो son है, this son is inherited from the relationship of these two person. ये दोनों के रिलेशनशिप से इसका सन इनहेरिट हुआ. देन दिस पर्टिकुलर डॉटर इज इनहेरिटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ दीज टू पर्सन. ये दोनों पर्सन के, इट मीन्स द फादर ऑफ दीज टू पर्सन इज द सेम, फादर सेम है बट मदर इज डिफरेंट. इस सन की माँ ये है और डॉटर की माँ ये है, बट द फादर ऑफ सन एंड डॉटर इज द सेम. देन द रिलेशनशिप ऑफ दिस टू पर्सन विल बी हाफ ब्लड रिलेशनशिप. तो ये दोनों पर्सन के बीच का जो रिलेशनशिप है ये हाफ ब्लड रिलेशनशिप कहलाएगा. क्यों? क्योंकि सन का फादर सेम, डॉटर का फादर सेम, बट ये डॉटर की माँ ये और सन की माँ ये, दोनों की माँ डिफरेंट है. दैट्स वाई जब भी हम ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम डिसाइड करेंगे तो ये रिलेशनशिप हाफ ब्लड रिलेशनशिप कहलाएगा. सो दिस इज अ हाफ ब्लड रिलेशनशिप. नाउ uterine blood relation, section 3 subclause 1e second. So two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by a different husband. Now the relationship will be a uterine blood if the mother of two person is the same बट द फादर इज डिफरेंट. अगर दो पर्सन की माँ सेम है बट फादर अलग अलग है, उस सिचुएशन में दोनों पर्सन के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशनशिप कहलाएगा यूटेराइन ब्लड रिलेशनशिप. सो व्हेन टू पर्सन हैव द सेम मदर बट डिफरेंट फादर्स, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड. इफ द मदर ऑफ टू पर्सन इज सेम बट द फादर इज डिफरेंट, अगर माँ एक ही है दो की पर्सन की बट फादर दोनों के अलग अलग है, तो ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप होगा वो यूटेराइन ब्लड कहलाएगा. सो यहाँ पर भी फुल ब्लड गलती से आया, यूटेराइन ब्लड होगा. मदर, फादर एंड फादर, यहाँ पर मदर सेम है बट फादर अलग अलग होगा. ये दोनों की यूनियन से सन है और दोनों की यूनियन से डॉटर है. तो यहाँ पर भी हम वही क्राइटेरिया देखेंगे कि नाउ दिस इज अ डॉटर, दिस इज अ सन. डॉटर की माँ यही है, सन की माँ भी यही है, बट द फादर इज चेंज. डॉटर का फादर ये है पर्टिकुलर पर्सन और सन का फादर ये है. सो नाउ अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस मदर इज द सेम, मदर ऑफ सन एंड डॉटर इज द सेम, बट द फादर ऑफ डॉटर एंड फादर ऑफ सन इज डिफरेंट. दोनों के फादर डिफरेंट है. देन द रिलेशनशिप ऑफ दीज टू पर्सन विल बी अ यूटेराइन ब्लड. तो अब ये जो दोनों पर्सन की जो रिलेशनशिप कहलाएगी वो रिलेशनशिप होगी यूटेराइन ब्लड. व्हाई? बिकॉज द मदर इज सेम एंड फादर्स आर डिफरेंट. तो फादर्स आर डिफरेंट. सो इन दिस वे वी कंक्लूड दिस टॉपिक. सो फुल ब्लड रिलेशनशिप कब होगी? अगर फादर और मदर दो पर्सन के सेम हैं तो रिलेशनशिप फुल ब्लड हो जाएगी. अगर फादर सेम है, मदर अलग अलग है तो रिलेशनशिप हाफ ब्लड हो जाएगी. और अगर मदर सेम है और फादर अलग अलग है तो रिलेशनशिप यूटेराइन ब्लड कहलाएगी. सो आई होप you understand this video
If you understand this video, please subscribe our channel, hit the notification button, hit the like button, share this video with your friends, and if you are having any doubt, you can directly contact me. Thank you. Thank you very much.